पहला रिएक्शन तो लगा दुनिया सब खत्म हो चुकी है। हम लोग रात भर रोते रहे, आत्महत्या तक हम लोग ने सोच लिया। दिल में तब भी था कि कहीं ना कहीं आशा की किरण जरूर होगी, क्योंकि हम ही दुनिया में अकेले नहीं होंगे। तभी 3 दिन तक मैं ऑफिस नहीं गया। उसके बाद मेरे बॉस ने मुझे जबरदस्ती बुलवाया, वो बस मेरे को गाड़ी में लेके चले गए अपने जीजा जी का। उनके जीजा जी डॉक्टर थे। उन्होंने जो जो चीजें बोली वो दिमाग में ऐसे घर करती गई। उन्होंने बोला कि अनुराग, भगवान ने तुम्हें इतना सॉलिड समझा है, तभी उन्होंने तुम्हें ऐसी परेशानी दी है। वो जानते हैं कि और कोई दुनिया में नहीं उठा सकता इसको। अभी तक तुम बिना लक्ष्य के जी रहे थे, अब जो है तुम्हारे पास लक्ष्य आ गया है कि इसको तुम्हें सुधारना है, साथ में ऐसे ही कई बच्चों को और सुधारना है। और उम्मीद करते हैं कि कुछ समय के बाद हम लोग भी कुछ न कुछ ऐसे बच्चों के लिए करते रहेंगे, जिससे कि इस बड़े क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि हमारे बाद क्या। हमारे बाद क्या? I believe this question is there with everyone's mind who are present in the meeting. My values are family, freedom, and service. What do you mean by family? Spend more time with your family, spouse, and kids. For that, most of the people in the meeting must be striving for that. Allow to live life of your child with the special needs to enjoy his life to fullest. Do we give enough time? Do we give enough time so that we can explore his energy, his ability, and his skill level? Have high energy to jump and play with your kid. Freedom from social stigma, that why it has happened to me, from dependency, and from worry of what after us. This worry is eating us. What after us? Service. Be role model to inspire matured, high energetic professional to join. This was decided long back, and now we are getting a lot many people through my bootcamp who are willing to part in the social segment to serve people, and this is how it will happen. Help more people. My mission: those who have joined first time, 1 lakh person with disabilities to get employment and lead dignified life in next now 4 years by 30th April 2029. Here's a small introduction of myself: engineer in electrical and electronics from NIT Karnataka, 1993 batch. Experience of 28 years in corporate world like Videocon, Philips, Haier, Electrolux, Tata Sky, World Space, Tata Docomo, and last organization was B2X, through which I was taking care of Samsung service all across India, and also extended my support in establishing services to Samsung services to Vietnam and US. About Garima madam, who is my wife, she is RCA certified, whom you will listen after maybe 5 minutes, and she is RCA certified in autism spectrum disorder, mother of Vatsal, that is one of the best qualification, and 17 years of working with children and adult with autism. Now grown to now this is my son Vatsal, 25 year, always happy. Sometimes he gives some tantrum, throws some tantrum, but not so damaging. Enjoys going to center, do some learning, stays with his peers at independent living training program. This is our. You feel the corporate pressure to keep climbing, but the heaviest weight you carry is the worry for the one waiting for you back home. So you take a step that's beyond your comfort zone. You decide to be more than a provider. You decide to be a father. Suddenly, you're free. You have the time to connect, the energy to jump and play, the freedom to serve your family first. Freedom to serve your family first. Let me know who all are ready with their question and answer. I'll just scan through. This is the 5-day bootcamp which we are all conducting on regular basis, where from 8:15 p.m. to 9:30 p.m., where we understand how a person sitting at different location can start for social work, can start a social venture sitting at your location, can do social work, so that I can visualize, I can realize also my mission statement: 1 lakh person with disabilities to get employment. It cannot happen alone. I need lot many people to stay with us. So I'll just scan through. I'll call Garima madam. This is about 5-day bootcamp, which I'm telling you, it is around 10,496 rupees. Whereas after this bootcamp, you will understand how it can be much more comfortable and convenient to adopt for 5-day bootcamp. It starts from Monday and ends on Friday. I'll just call. These are some of our students who are. Hi, I am Alankrita from Approach Autism Society, student and I was a student of batch 4, and I have just completed my digital employment course, and I am an employee as well, as an intern at Approach Autism Society, and I am very excited and grateful
for the opportunity to apply my learnings in the real world. By the way, I am introducing Hello everyone. the handiwork done by my peers. I am digital Indian approach autism. I am recently completed digital employment course. I am excited and grateful for by chance to apply my learning in the real world. Through this video, I am introducing and we handing work of my peers. I am showcasing in My name is Saksama. the I'm intern at Approach Autism, where I have recently completed the Digital Employment Pro course. I am excited and grateful for the opportunity to apply my learnings in the real world. By the way of this video, I am introducing the handiworks of my peers. I am showcasing the beautiful and exclusive 5-day boot camp, which will start on 10,480 rupees, but it is being offered at 199. Purpose is that you identify your niche and you can start working wherever you are. Because there will be a lot of commercial constraint how you can do it. 15 years of experience, I would help try to solve you. पहला रिएक्शन तो लगा दुनिया सब खत्म हो चुकी है। हम लोग रात भर रोते रहे। आत्महत्या तक हम लोग ने सोच लिया। दिल में तब भी था कि कहीं ना कहीं आशा की किरण जरूर होगी, क्योंकि हम ही दुनिया में अकेले नहीं होंगे। Good evening. So I'll call Garima Madam for the session, and Good evening, everyone. Yeah, good evening. How are you all? Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. So, कैसे हो सब लोग? हम लोग का पहले बिहेवियर मैनेजमेंट किया था हम लोगों ने। अभी आज मॉडिफिकेशन है, जिसमें कुछ चीजें जानेंगे, जैसे कि जो ABA VBA के जो स्टेप्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, वो वी विल कम टू नो इन बिहेवियर थेरेपी। देयर आर मेनी थेरेपीज, बट ABA VBA बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। मैं शेयर करती हूँ। Share some. So we all know behavior modification. Why we do behavior modification? We do behavior modification to teach the appropriate and desired new behaviors, and to maintain the previously acquired proper behavior. Also, we do the modification, and we modify to eliminate the undesired behavior. So new skills जो हम लोग थेरेपी में सिखाते हैं, नई नई चीजें, वो भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन है। जो हम लोग बोलते हैं कि हम बिहेवियर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हमें उसको हटाना है, तो भी हम मॉडिफिकेशन ही कर रहे होते हैं। एंड व्हेन वी आर ट्राइंग टू मेंटेन एनी बिहेवियर विच इज प्रीवियसली अचीव्ड, then also we do behavior modification. So we will try to understand by a simple story. Arjun likes to sit on swings, climb on jungle gym slides and seesaw. His parents visited
relatives in Mumbai. They decided to take Arjun to an amusement park. The moment Arjun got down from the car, he started screaming. His mother tried to quieten him, but Arjun stamped his feet, fell on the ground, cried, and yelled, "Finished, bye bye." His family had no option but to get him back in the car and return. Now, why do you think why Arjun did not enter the amusement park, and why do you think this happened? Arjun liked the park very much. Why he did not enter the park this time? You can unmute and you can answer, or you can write the answer in comment chat box. It is not the usual park he goes, it's a different one. Very good, very nice. What else? He was not possibly told beforehand that he's been going to take into an amusement park. Right. So it was the first answer was it was a new park. It was not the previous park. We have to sensitize him for the new situation. Second answer was what was the second answer? Sorry. He was not told beforehand He was not counseled that we are going to the new park. That is similar to the first one. What else? So we need to desensitize. We need to sensitize for the new situation, or you can say we'll have to counsel for the new situation, or we can say you can put a new schedule card in his new schedule ki aaj ye ho raha hai. What else? What else bothered him? It might be that there are some sensory issues which bothered him. So for that also we need to desensitize or give a proper sensory equipment that is needed. Or या फिर हो सकता है he wants to tell something, communicate something and is not able to. So communication difficulties अगर हैं तो you need to teach him to express himself either by the flashcards or by sign or by speech or by any laptop or iPad, whatever. If there is lack of interpretation of social situations, prepare for changes, prepare for new situations by either cards, flashcards, or introducing cards in the new schedule and writing the counseling, just like social stories, counsel karna 2-3 instructions say, or if there are sensory issues, you can desensitize. And if there is lack of information regarding expectations from others and vice versa, that also will make the expectations very clear by simple instructions or by through pictures, visual cues. हम लोग expectations बहुत clear कर लेंगे. So इस सब करने से will see the tantrums actually vanishes. Associating the situation to a past unpleasant experience, it might happen that he has experienced something unpleasant in the previous experience, and for that also we should be focused and prepare the child. So सारे कुछ का सार ये है कि we should prepare him for the situation, should prepare him to express himself and to desensitize the new sensory issues and the expectations. यहाँ पे भी we do ABC format. Here also we do antecedents, behavior, consequences, which is the ABC behavior. While doing on the table, in therapy we do ABC, and while doing the behavior modification, off the table we also see antecedent, behavior, and consequences. By manipulating either of the antecedents or the consequences, we can change and alter the behavior. We can only change and alter. We cannot stop the behavior. We can change the behavior. So antecedents are: when does the behavior occur? Where does the behavior occur? Who are the people present during the behavior? What do people say or do before the behavior? यहाँ पे what do people say or do before the behavior mostly are the instructions during the behavior therapy. The most of the behavior therapy and most of the skills achieved depends upon the antecedents, which are instructions which the teacher is giving at the time of therapy. So voice of the instruction, or if you are repeating the instruction, that also becomes the antecedent. So antecedents are sometimes instructions which the teacher is giving.
Are there any other behaviors that take place before the behavior? And when, where, and with whom the behavior takes place the least number of times? So, answering these questions, we get the antecedents, and when we get the antecedents, we change the antecedents to get the alternative behavior, age appropriate behavior, a socially acceptable behavior which we want. तो अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं ड्यूरिंग थेरेपी सपोज if I'm asking any child, I'm teaching the identification of colors, he knows the color, and if I'm asking, let me, and if I'm asking he's verbal, he can identify through speech. So I'm asking, what is this color, which color is this? I think you need to unmute yourself. या तो मैं करती हूँ. So if I'm asking any child during therapy, which color is this, and he knows the color. So if I'm asking which color is this, and before giving any answer, he knows the answer, I know that. I'm just maintaining the response. If I'm asking which color is this, and if a child sees something and he looks outside the classroom and he shouts and he shouts that something like कोई advertisement या किसी का name he is shouting instead of answering the question, which color is this? And after shouting, he answers red color. So what should I do? Should I reinforce that behavior or should I stop giving the attention? What should I do? I mean, this shouting of the why does that occur? What is the antecedent for that particular shouting? And if I'm asking the question and he's giving the answer after giving any, without giving any answer correctly, he's shouting and then giving me the answer. Should I reinforce the behavior? Should I not reinforce the behavior? What should I do? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं. During the therapy, after giving my instruction, if the child is not responding to my instruction immediately, he is first shouting and then responding. He is looking out of the class, he is seeing something and he was shouting. I'm asking what was the antecedent for that behavior, and if I'm asking and he's not responding me immediately, what should I do? Should I repeat my instruction? Should I reinforce the behavior? Should I stop giving the reinforcement? What should I do? If it's a one-off case, then I think we'll have to ignore it. If it is repeated, then possibly we'll have to look into some other solution. Okay, but for that instruction, which color is this? What should I do? Take the answer. He gave the answer. He gave the answer. Should I reinforce that answer? No, just carry on as though nothing happened. You should repeat the instruction. Okay, you ignore that shouting of the behavior. Repeat the instruction again. Taking the name, which color is this? Then get the right response. Then reinforce that behavior. Right. So if कोई instruction या कोई चीज अगर नहीं follow हो रहा है, तो you something. Yeah. Ma'am, first of all, he's got distracted, na? So Yeah, we you have to got cut distracted. first we have to cut off that distraction, na? Right. Then So, repeat the instruction and take the response. Then reinforce. Okay. Thank you. Do not reinforce at that time. What we generally do, which color is this? He is shouting, then he gave the answer red, then very nice, very good. So this is the wrong therapy, what I'm trying to say. Repeat the instruction, which color is this? Red, very nice, very good. Ignore that behavior and ignore your antecedent also. Repeat the instruction. Actually, these things happen. That's why I gave you this example. चलिए
Okay, so these are the questions. These are the antecedents. Behavior, look at the behavior very quickly. Behavior should be very much specific and should be observable. What does the person do? Always think of what is said or done as behavior, and do not interpret any behavior like tantrum, hyper, and violent and aggressive and angry. So what are the consequences? Now, in the ABA, VBA and behavior therapy, we generally work on consequences mainly, especially. We always reinforce any instruction which is given. We take the response through prompt and we immediately reinforce the behavior. There are certain strategies for reinforcement. We do differential reinforcement. So reinforcing that particular behavior which is on acquisition and which you are teaching, which is very new to the child, you reinforce that particular action or behavior, and you stop giving the reinforcement, or it should be very small in quantity. The behavior which is achieved, which is mastered, you can stop the reinforcement, or you can sometimes you can give, sometimes not, but you need not reinforce all the time for the behavior that is achieved. But the behaviors, the skills which are to be taught and which is very new to the child, you should always must reinforce the behavior. So these are the consequences. What follows on the behavior? What do people in the environment do when the behavior occurs? And does the child get anything after? And does the child get out of or avoid anything as a result of the behavior? These are the consequences. So when I was asking which color is this, and he was shouting, so mera instruction was the antecedent and his shouting was the output, was the behavior. So that's why I shouldn't reinforce that behavior. We cut there only and we again repeat the instruction. So it goes like this. One instruction from the teacher, you follow through that instruction by prompt, with prompt or without prompt, and you reinforce that behavior. So that is the steps. Instruction, follow through the behavior, and response, consequence or reinforcement. Give the instruction, response and consequence. Give the instruction, response and consequence. That is reinforcement. ऐसे चलता है थेरेपी का एक ट्रेन जो चलती है. If in between something happens and your instruction is now ignored, तो आपको you have to repeat the instruction again, then get the output through prompt and then reinforce. The procedures for teaching new skills and for reducing the undesirable ones by manipulating consequence, and these are reinforcement, punishment and extinction. Reinforcement is done when you are teaching new skills. Punishment is done when what is actually reinforcement? When any behavior is getting strengthened. अगर वो behavior बढ़ रहा है and it is getting strengthened day by day, then that particular consequence which you are giving as a reward is that becomes reinforcement for the child. And if behavior is going down and is not learning anything, has stopped giving you the response, आपको लगता है interest lose हो रहा है, sometimes he gives, sometimes he doesn't give the response, then the consequence in which you are working is working as punishment for that child. So any consequence or any reward by which he is not learning anything becomes punishment for that child, and any reward and any reinforcement and consequence which is strengthening any behavior, suppose matching and what is this and what is your name and do this and show me your head and show me this and point whatever instruction you are giving, if responding, so आपका consequence is reinforcement. When you put any behavior or any consequence on extinction, that means you are stopping the reinforcement. Till now, if the behavior gets strengthened, just because you have somehow reinforced that behavior. If you are stopping the reinforcement, putting the consequences on extinction, you say that we are putting the behavior on extinction, and when we put any behavior on extinction, first the behavior will rise. First behavior will rise to get your attention or to get the reinforcement, and then if you are consistent in stopping the reinforcement, then only it will go down. That is extinction. The behavior will rise. The behavior will rise when you are putting any behavior on extinction. That is known as extinction burst. So for example,
I'm giving you an example of extinction burst and putting any behavior on extinction. So if let's see, if a child is, huh? If a child is urinating in the swimming pool, common example, a child is an adult is urinating in the swimming pool and he is doing that for attention. Now we are putting that behavior on extinction and we are stopping giving him attention, which is very, very, very difficult. If we are putting that behavior on extinction and we're stopping any other attention, हम लोग stop कर रहे हैं उनको देने से, first of all, behavior will increase. He will urinate more in frequency, in intensity, हर तरह से behavior will increase to get more attention. So otherwise, थोड़ा सा भी करने से he was getting the attention. Now he's not getting attention बिल्कुल भी, तो the behavior will increase. And that is extinction burst. And उसको देखने के बाद सारे लोग सोचेंगे अब तो हमें रोकने जाना चाहिए. Now I will go to stop him. He will not understand otherwise. And that is his victory. तो एक्सटेंशन बर्स्ट पे वर्क करने के लिए हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. जो हमने स्ट्रैटेजी अप्लाई किया है, स्टॉप गिविंग हिम द कॉन्सिक्वेंस, गुड कॉन्सिक्वेंस एंड गुड रिवॉर्ड एंड अटेंशन, वो स्टॉप करने पे हमें कंसिस्टेंट रहना होगा. तो फर्स्ट इट विल इंक्रीज, देन इट विल डिक्रीज, then again it will increase to some extent, then it will decrease, then after some time, after kuch months, it will come to zero. Putting any behavior on extinction, that is manipulating the consequences, is very difficult. So it's better, prevention is better than cure hota hai, it's better to manipulate the antecedents so that behavior doesn't get strengthened. Bad behaviors को शुरू से ही reinforce ही मत करिए, इग्नोर कर दीजिए, तो अटेंशन सीकिंग में कन्वर्ट ही नहीं होगा. जब बिहेवियर रिजिड हो जाते हैं, इट कम्स अ पैटर्न, रिजिड पैटर्न, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल और मैनेज. नाउ एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज? यहीं पे रुक जाते हैं हम. Yeah, my son, in the night when we say good night, it is not enough when we say one time. We have to say it many times. He sees our mouth and like that, different tones, all that has to be there. So it will take at least 9-10 times. We have to say good night. How to Don't stop? say 9 to 10 times good night. Just respond for one good night only, and then show him the card. Good night. Okay, card good night. Okay. Because अगर आप बार बार repeat करेंगे, then it again becoming a pattern. That is a kind of stimming, I think, for him. Like. So you will have to stop the stimming also, na? Okay. It's not kind of sensory stimming. He is doing to get the attention. I don't know. Okay. Fine. Every function of the behavior gets converted into attention seeking, because they are not getting attention for any other response, na? That's why they are seeking attention for any type of bad response. Child is sitting quietly, you will not give attention. Child is throwing chairs, you will give attention. Child is walking quietly in the mall and market, you will not give attention. Child is snatching the uncle chips and kurkure, you will give the attention. ये कुछ ये सब हम लोग करते हैं, that just you try to stop the behavior उसी समय. Stop giving the reinforcement, stop giving the try to manipulate the antecedent, change the antecedent, structure the environment. These are the antecedent controls we should do from the very beginning. अब 24 साल का हो गया adult, now behavior has become so much मतलब aggressive. Now you have come to manage the behavior. How will we do? We'll put the behavior on extinction. Now 24 years का energy तो दिखेगा ना फिर. तो मैम मेरा बेटा भी जैसे हेलो हाँ मनोज. मैडम मेरा बेटा भी जैसे साल भर पहले जैसे खाना खाना बैठते थे तो वो सबसे पूछता था, सिस्टर से और मेरी वाइफ से कि खाना खा लो. जब तक वहां से मतलब वो अलाउ नहीं करेंगे खाना खा लो, ऐसा बोलेंगे नहीं, वो नहीं खाता था.
तो हम इससे बहुत परेशान हो गए थे, मैंने इस एक्टिविटी से इसके, तो फिर हमने धीरे धीरे क्या, उस एट ए टाइम हम उसको इंस्ट्रक्शंस कुछ कुछ देने लगे, तो ऐसा करके वो धीरे धीरे करके वो फिर वो अभी वैसा नहीं पूछता है। क्या आपने तो क्या इंस्ट्रक्शन दिया फिर? जाओ मतलब ग्लास में पानी लेके आ जाओ, डाइवर्ट कर मैं वहां दिया? से, हाँ वहाँ इंस्ट्रक्शन मैंने देने लगा, उसी इंस्टेंस पे मैंने अलग इंस्ट्रक्शन देना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे जाके वो अब वो ऐसा नहीं पूछता है कि खाना खा लो खाना खा अच्छा, लो आप लोग सबसे। बताओ, ये मनोज जी के बेटे को क्या क्या हो रहा था एक्चुअली? व्हाट वाज गोइंग ऑन व्हेन ही कीप्स ऑन आस्किंग खाना खा लो खाना खा लो खाना खा लो? व्हाट वाज हैपनिंग एक्चुअली? कैन एनीबडी आंसर? You all know autism spectrum disorder, सबके बच्चों को, and you, What did he ask? I didn't if understand. anything he's asking, if he's repeating again and again खाना खा लो खाना खा लो खाना, जब खाना पूछता था ना मनोज जी, खाना खा ले, जी मैम, सभी मेंबर से पूछता है खाना खाने के लिए, तो अगर जब तक वो बोलेंगे नहीं, वो फिर चारों मेंबर से जब पूछने तक का वो मतलब बोलेंगे नहीं ये खाना खाएगा नहीं. What is this actually? This is prompt dependence. He needs prompt. खाना खाएं खा लो, खाना खा ले बोला जाएगा एंड खा लेंगे. तो अब प्रॉम्प्ट डिपेंडेंस ऑटिज्म की बहुत बड़ी वो है, कैरेक्टरिस्टिक है. इसीलिए तो प्रॉम्प्ट देने से मना किया जाता है. वी जनरली डोंट गिव मच प्रॉम्प्ट एंड यू गिव ओनली दैट प्रॉम्प्ट विच कैन बी फेडेड इन फ्यूचर. नाउ हाउ विल यू फेड? अभी तो इन्होंने डाइवर्ट कर दिया इंस्ट्रक्शन, पर वो प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी तो है ना. दे बिकम सो मच prompt dependent that if a child is, they hold the urine, they hold the potty and shushu, and they wait for the prompt. Mama jaye, ha jao, then they will go. Otherwise they will hold the whole day. This kind of prompt dependence you don't want them to become ना. ये तो अति हो गई, बिल्कुल जाती है कि हाँ I'm holding, when you will say go then only I will go, otherwise I won't go. ये तो खाने का था, वो तो हम और दूसरा बोल रहे हैं. क्या होता है प्रॉम्प्ट डिपेंडेंस में? क्या होता है? दे नीड फॉर एवरी रिस्पॉन्स, दे नीड, दे आर डिपेंडेंट. सो देयर वाज वन चाइल्ड, very high functioning, he was very good in academics, he was going to mainstream school, small child. What he used to do, always take his mama's face and always ask, mama, I have done maths work, mama, now my maths work is done, now I can do English, mama, English work is finished. For that also, mama, if 42 plus 43, oh, 2 plus 3, I can add, I should add, yes, add 3 plus 2, okay, 4 plus 4, mama, I should add, yes, add. This much of prompt dependency. So what should we do then? अब इतना प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी के लिए हम लोगों ने उसको स्ट्रक्चर किया, हमने उसको इंडिपेंडेंट शेड्यूल दिया. I've given the schedule, within the schedule, a sub schedule on the table, and he was verbal. He's a mainstream child. He knows how all the things. He can do independently all the homeworks. But it was the characteristic of autism, prompt dependency. So now we taught, he knew how to do independent work, how to follow the schedule, because he did mother and child with me earlier. But somehow वो नहीं हो रहा था, because अभी तो मेन स्ट्रीम जाए, तो again we put him on schedule, उनके टेबल पे लगा दिया, and he was doing that independently, and within 2-3 days this prompt dependency and attention seeking behaviors got vanished. Madam, excuse me, this is Dr. Manimala. You said this prompt dependency you have to slowly fade. I didn't get you how to schedule. You said we scheduled it, and it slowly he was out of it. You'll have to fade the prompt, and if he's getting converted into attention seeking. For example, I'll tell you the situation. Like my son, when if he has to go to the toilet, and if I am around, if I am not around, he attends, he goes to the restroom on his own. But if I am around, he'll say, I want to go to the toilet, restroom. Yes. Same example I was giving. See. So what actually it doesn't happen always, but it happens always. So what do you think I should, what strategy He I is should doing with you only, na? Matlab he is asking you only. Otherwise, if you are not around, he doesn't ask.
If I am not around, he goes. He goes, he goes by Yeah. himself. Yeah. So you'll have to fade again. He has become prompt dependency only on you, otherwise he's managing. Yeah, So reasonably. the problem is not more severe. So you can fade him, and if he's asking, do not look at him or show him, just show him the flashcard or show him the schedule without looking at him. Okay. Without giving, ये देख लो और चले जाओ, not like that. Just Okay. point the finger, or otherwise you fade yourself. How will you fade then? You are always all around him. Yeah. But if he's asking, don't give, you keep on busy in your जो भी आप काम कर रहे हो, you keep on doing that work and show him the card without giving any expression also. Okay. He has a schedule, like he has to unveil the screen. Then he, for everything, he will say, as soon as he gets up, screen, okay, open the screen. Then again, he'll say bedsheet, okay, fold the bedsheet. As soon as he gets up from bed in the morning. Then he'll say he has to undress. So for that, he used to have a towel on him and undress. Again, he'll say towel. So I'll say, okay. I don't have to say anything more, but I should say that. No, but Otherwise, he keeps it's asking. it's very easy to fade the most intrusive prompt first. So it is easy to fade the schedule cards or the flashcards which I am telling you to show him. But it is very difficult to fade the verbal prompt. Yeah. If So they what do I become do? prompt dependent verbally, that is more difficult. That will be more difficult to you for you to fade. So अभी उसको पीछे कर दो flash card पे. Convert that response of show a flashcard to him only. Do not give any attention. Do not give any facial expression also. And after some time, when he sees and goes, you fade that flashcard also. Okay. अब I cannot say ना कि आप ही चले जाओ वहां से. I cannot do that. Always. Yeah. So In fade all yourself, situations. so you will have to put your child in residential. हमारे कुछ सेशंस हुए हैं, हमारे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री 1-on-1 सेशंस हुए हैं कल परसों में मनोज जी के साथ एंड प्रिया किसके साथ, 2-3 लोगों के साथ हमारे 1-on-1 सेशंस वी डिड yesterday and day before yesterday. So some of you are interested in schedules and structuring and social stories. देखते हैं कैसे होता है, हैं? हाँ, किसी को सोशल स्टोरीज में अगर कोई क्वेरी है तो कल सेशन है तो उसमें हम लोग लाइव ले लेंगे उनका सोशल स्टोरी. यहीं पे सोशल स्टोरी लिखेंगे उसके लिए, सो दैट कि एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि सोशल स्टोरी लिखनी कैसे. इट इज इंडिविजुअल होता है, दिस पर्टिकुलर किसी एक बच्चे के लिए जो सोशल स्टोरी होती है दैट वर्क्स फॉर हिम ओनली. सोशल स्टोरीज कल है हमारा टॉपिक, तो हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है. So consequences reinforcement ही होते हैं. Consequences are punishment also, and consequences are putting any behavior and extension also. Generally on table or off the table when the child is small or adult maybe, we do reinforcement technique only. So when a behavior is strengthened by an immediate consequence, that is reinforcement, can be used to teach new behaviors. It increases the existing behavior and it also maintains the currently existing acceptable behavior. The behavior which is achieved, anything which I have said, anything which is said or done is a behavior. So the child is matching, child is saying any color names, child is telling his name while you are asking him a question. All these are behaviors. So any behavior which you want to maintain, which he has acquired, तो आप मास्टर कर लिया उसने, तो that can also be reinforced. बस उसका देखना पड़ेगा कि कभी कभी reinforce करिए, कभी कभी नहीं करिए. तो in simple terms, reinforcement means any situation जहाँ पे behavior हो रहा है and something desirable happens. The child understands like this only. There's a music room. When I do something good,
When I do this thing, I get this thing. This is the consequence the child understands. So you need to understand what the child is understanding. Child is understanding any situation, is taking that visual cue, any behavior which is happening, good behavior or bad, we are considering here good. अगर मैं कुछ if a child it's a music room and the if teacher is asking me to play sa and if I'm playing sa, he gives me chocolate and says very good, oh that is very nice. This is the consequence they understand. अब इस तीन में अगर आप गड़बड़ कर देते हो, सिचुएशन चेंज कर देते हो, इंस्ट्रक्शन कोई और दे देते हैं, the behavior is not, you are not getting the behavior which you want and you are enforcing that behavior, then the therapy becomes gadbad therapy. So you will have to give any instruction, follow through that instruction and reinforce. Now your therapy completes. Off the table also आपको instruction दे रहे हैं बच्चे को, close the door. A child knows how to close the door. He is standing, but he is not closing. He is roaming here and there and here. You again repeat the instruction. Close the door. He is not again listening. He runs there. He कुछ और छू रहा है, kitchen में चला गया. You again repeat, and after that, sometime you get up from your place and you go and close the door. Sub therapy, sub instruction, sub बेकार. You should be always ready to follow through the instruction. तो क्या होना चाहिए था? आपने इंस्ट्रक्शन दिया क्लोज द डोर, उसने नहीं सुना, जो कि अनएक्सपेक्टेड था. आप जानते हो वो रोज सुनता ही है, आज वो कुछ नहीं हुआ. Get up from your place, prompt him to near the door, get him close the door. Very nice, very good. Give him something concrete reward if possible. Not possible, just give the social praise because that close the door has achieved. You need not give the immediate concrete reinforcement, but very good, very nice, well done. Now your work is finished. होता क्या है? करते रहते इंस्ट्रक्शन रिपीट पे कुछ नहीं होता. तो वो पूरी जिंदगी व्हाट इज दिस इज एप्पल, व्हाट इज दिस इज एप्पल पे पूरी जिंदगी एप्पल के अराउंड निकल जाती है. जल्दी जल्दी बढ़ना होता है ना. एक एप्पल अचीव हुआ तो अभी दूसरे पे जाएंगे, क्योंकि वो आप होता क्या है कि व्हेन यू आस्क ना शो मी एप्पल, ही समटाइम्स शोइंग समटाइम्स नॉट शोइंग. तो यू से कि मैम उसको एप्पल आता है पर आज उसका मूड नहीं है. थेरेपी में ऐसा नहीं होता. अगर हमने एप्पल पूछा है और उसे आता है, he has achieved that skill, will point एप्पल. चाहे उसको फीवर भी हो तो क्या हो, तभी हम कहते हैं वो मास्टर्ड हुआ एप्पल. अदरवाइज वो बनाना एप्पल कार मोबाइल घूमते रहो. The consequence of the behavior that makes the behavior happen again in the same situation, and what can be the reinforcers. अच्छा, एक reinforcers अभी बताते हैं, एक वीडियो है. बन रहा है वीडियो, देख लो.
ठीक है। ये जो बच्ची है ये बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट डिपेंडेंट है, विजुअली इम्पेयर्ड भी है और सीवियरली ऑटिस्टिक भी है। शी knows how to paint, बहुत अच्छा वर्क है इसका, वेरी हाई फंक्शनिंग ऑल्सो। बट इफ a prompt चाहिए, अगर मैं used to fit the prompt, but she somehow needs the prompt, and if I'm not giving the prompt, she bites me, हाथ पकड़ के. She needs vestibular also, likes to rock during activity also. So another screen चल रहा है ना? Yes, ma'am. Okay. Very nice. Shoes. Very good. Shoes. 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 Very good. Show me shoes. Very nice. Very good. Give me five. Give me five. Yes. Nice. Match. Very good. Match. Match. Yay. Match. Very nice. Stop. Do this. Touch your head. Head. Clap hands. Clap. Very nice. Very good, Lakshmi. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪಾಪ ನಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ Just a minute, किसी का नॉक हुआ है, just a minute. అమ్మ ये थेरेपी थी जो मैं ले रही थी. फर्स्ट वन वाज द नॉट बिहेवियर थेरेपी, सेकंड सेशन वाज द बिहेवियर थेरेपी.
बनाओ Very good. तो reinforcers हो सकते हैं edibles, toys, sensory items, activities, social praise. Reinforcement can be anything. Child is playing with the visiting cards or koi wrappers and toffee ka wrappers, empty bottles. Anything can be reinforcement jo the child is liking. Strings, toys, empty cans, leaves, tissue paper, anything. Pepsi, bubbles, blocks, visual toys, smell bottles, books, balloons, puzzles, kurkure, namkeen, paratha, chips. But reinforcement other times पे नहीं होना चाहिए. You will not give the reinforcement at other times. Not when you are doing the therapy, then only you should use the reinforcement. So otherwise the motivation down हो जाएगा ना अगर आप हर समय वो खिला रहे हैं. ले लिया Toys, empty bottles, mobile, colors, pencils, high fives, ये सब भी social praise भी होता है. But after some time, शुरू में तो you need concrete, something concrete. Giving stars, points, coins, counters. It works with very high functioning kids. 4 stars हो जाएंगे तो chocolate मिलेगा. This kind of reinforcement we also use. अच्छा कुछ examples हैं. Reward the child or praise the child when he is doing something desirable, not only when he is giving a response. For example, walking quietly with mother in the market, waiting for a bus, waiting at doctor's place, carrying his own bag and bottle. If he's sitting quietly in van, school van, then also if he's smiling and seeming happy, if he's using a toilet independently, if he's sitting and eating, if he is behaving very nicely when guests are there, if you are busy somewhere and he's not coming to get the attention or asking you anything, then also he is behaving very nicely. You should reinforce at that time also. And for desired response for an instruction or request, that so you reinforce usually. Punishment occurs when a behavior is followed by an immediate consequence and the behavior is less likely to occur in the future. Punishment here is not defined by unfavorable consequence. It is not about retribution or retaliation. It is just like the consequence which child doesn't like. Maybe you like that consequence. If the child is not liking that consequence and if the behavior, the good behavior or the bad behavior is not strengthening, then that consequence is punishment. For example, again यहाँ बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, मिथ है, जिसको हमें शेयर करना बहुत जरूरी है. If parents are coming to you, अब हम थेरेपी लेने जा रहे हैं, they are coming and they are bringing reinforcement के लिए किशमिश और dry fruits or soft or mishri, because they are very good for the child health. Now they are bringing that as reinforcement. Now the question here is, if the child, the behavior is not strengthening and the motivational value is 0 for that soft and then mishri and that dry fruits, and he is liking that, but the motivational value is not so much high that he is doing like this, ki, I'm ready to follow an instruction because there is kurkure, there is chips. Agar aisa nahi hai, to that thing is not the reinforcement. So that soft and mishri and dry fruits are good for you, it doesn't mean that they work as reinforcement. And when while using reinforcement, you will say chips and kurkure तो बहुत harm करेगा, तो भाई हम कुरकुरे की एक स्टिक से थेरेपी ले रहे हैं, कुरकुरे की एक स्टिक के इतने 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 पार्ट्स को देते हैं, that is differential reinforcement. और अगर एक दो स्टिक से पूरी 45 minutes की थेरेपी ले रहे हैं, तो what is harm in that? At least he is learning something. The reinforcement doesn't mean कि आप पूरा पैकेट दे के बैठ गए, नाश्ता और खाना हो रहा है and you are doing the therapy. वो तो reinforcement हो ही नहीं रहा, वो तो कुछ और ही हो रहा है. अच्छा हाँ, एक एग्जाम्पल देना था.
The child likes to rub anything, है ना, वो टेबल पे कुछ गिर जाता है तो उसको वाइप करना, he likes to wipe. तो what we अब wiping is, आप तो सोच रहे हो कि this is a punishment कि आप गंदा कर रहे हो and you are making him to wipe the table, है ना, but that is a reinforcement for that particular child. Why I'm trying to say this कि punishment और reinforcement आपके सोचने से नहीं बनेगा, वो बच्चे के अकॉर्डिंग बनेगा. So what we used to do, हमें को इंस्ट्रक्शन दिया, हम एक पाउडर उसके लिए डालते थे, स्प्रिंकल करते थे टेबल पे, और वो एक कपड़ा उसके पास होता था. आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शन एज अ रिवॉर्ड what we used to do, we sprinkle the powder, he used to wipe, he's sprinkling the powder, he used to wipe. That was the reinforcement for one particular child. Another example, I give an instruction, I make him follow that instruction, and I slap him. That is the reward. He likes that because that is a sensory issue. He likes that pressure, and to get that pressure, he moves his thing आगे कि हमको मारो. That is the reinforcement. For that he was learning. So that hitting is the reward. That wiping is the reward. And one more example. कोई पेरेंट आया और उसने उसको चॉकलेट लाया था कि चॉकलेट तो अच्छी चीज होती है ना भाई, बच्चे तो चॉकलेट लाइक करते हैं. चॉकलेट वो वर्क ही नहीं कर रहा because he doesn't like chocolate. If any chocolate or अच्छा वाला चीज which you think is very nice, or if it's not working and the child is not learning and the motivational value is 0, then that chocolate is becoming punishment for that child. You're getting my point? What is punishment and what is reinforcement? That chocolate has become punishment, that hitting is becoming reinforcement. The child likes the behavior. If the behavior is going higher, then only it is considered as reinforcement. It's not like that कि चॉकलेट और दे रहे हैं, केक दे रहे हैं, क्यों नहीं सीख रहा, और आप तो हिट कर रही हैं और वो सीखे ले रहा है, आप तो वाइप करा रही हैं एंड इज लर्निंग. तो ये एग्जाम्पल पे देना भी जरूरी था. आपका बिहेवियर बढ़ना चाहिए ना, तभी तो आप थेरेपी चलेगी. वहीं पे गोल गोल घूम रहा होगा कैसे थेरेपी चलेगी? फिर तो 3 महीने में एप्पल भी नहीं आएगा. एप्पल ही सिखाते हैं ना हम लोग, सब लोग पहले एप्पल. So the occurrence of a behavior is followed by an immediate consequence, और behavior future में नहीं हो रहा is the punishment. ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ. So any situation and a behavior is occurring and something unpleasant and undesirable for that child, not for you. Something undesirable happens and behavior reduces in similar situation in future. This is known as punishment, and it is the least preferred procedure we don't generally use. We only work on reinforcement, and when we don't want to give reinforcement, we stop giving reinforcement. We only work on that. But sometimes punishment works. Generally, it is the least preferred procedure. So some of the punishment procedures are timeout, moving the child from a more reinforcing environment to a lesser one. Doesn't work with the autistic kids. लेसर 1 पे आप डालेंगे, वो वहां पे और मजे करने लगता है. यू आर थ्रोइंग हिम आउट ऑफ द क्लास, वहां वो और एंजॉय कर रहा है. आपने कब पानी आपने गिरा दिया एंड आस्किंग हिम टू वाइप द सरफेस, ही इज एंजॉयिंग दैट. So these are the punishment. These punishments don't work for the autistic kids. Engaging in an effortful activity for some time, या spelling correct करने को बोलते हैं आप, या you ask them to clean the spilt milk and the rest of the floor, या कई बार टॉयलेट में भी हमें देखा आप बोलते हो, आप कहते हैं कि पनिशमेंट की तरह आप उसी से साफ कराइए. They enjoy that. That also that doesn't work. Taking away stars, points, coin counters, etc. So 4 stars से chocolate दे रहे थे. I'm taking 1 star. You have not completed the work, so you will not get the chocolate. May work for the high functioning, I don't know, but autism में भी ये भी नहीं होता. Because they are rigid ना. अभी रोज वो देख रहे हैं कि 4 stars से they will have the chocolate है, and immediately you are pulling 1 star down, so that missing a star becomes the problem for them. Not like that they will not get the chocolate, that's why they are angry, but they are upset because abhi tak mein 4 stars tha, now 1 star is, they are Mr. Perfect. Oh, perfection nahi dikhta, then also behavior comes. So taking away points, stars, etc. for undesirable behaviors.
Extension, I told you, when a previously reinforced behavior strengthen ही तभी हुआ है when it has been previously unintentionally reinforced. जाने अनजाने आपसे reinforce हो गया, आपसे attention दे दिया आपने. That's why it has strengthened now. Now, when a previously reinforced behavior is no longer being reinforced, and as a result the behavior decreases and stops occurring, you say that behavior has been put on extension. And when it is put on extension, what शुरू में behavior will increase in frequency, duration and intensity, because to get more reinforcement, they are very smart. To get more attention and more reinforcement, they will show more behavior in intensity and frequency, जिससे आप डर के मारे कर दो. And यहीं पे आपको consistent रहना है. So after extension burst, when you are consistent on putting any behavior on extension, I mean totally stopping the reinforcement, then only it will get down. Some of the practical strategies here now. Working on the antecedents always work, I told you. Alter the environment. This refers to modifying the physical environment in the home, school in order to prevent the behavior. Structure the home, structure the school, structure your room, such that behavior hone ही ना पाए. It also refers to modify the responses of the social environment at home and school. ये सबसे आसान तरीका है भाई, यही समझ लो. एंटीसीडेंट पे काम करो, स्ट्रक्चर करो, अच्छा से शेड्यूल डालो, क्वालिटी टाइम में बच्चे को एंगेज करो, अपने आप को फेट करो, थर्ड पार्टी अप्रोच डालो, कोई ट्यूटर, कोई हेल्पर, कोई टीचर से इंस्ट्रक्शन दिलवाओ. यही की चीजें हैं, यही चीजें हैं जिनसे अच्छे बिहेवियर्स आते हैं. Some of the antecedent controls are locking doors and gates and cupboards, removing things that the child breaks or destroys, put heavy furniture, अगर वो इधर से उधर furniture को कर रहा है, removing the furniture if it's heavy furniture is not possible, having sliding windows or slits on the doors, removing latches inside. Otherwise तो क्या होगा, सारे दिन बच्चा अंदर से दरवाजा बंद कर रहा है, आप डांट रहे हो, ओपन द डोर, फिर वो बंद कर रहा है, आप डांटो, हो क्या रहा है, बिहेवियर बढ़ रहा है, आप बहुत सारा टेंशन दे रहे हो, बार बार भाग के जा रहे हो, उसको ठीक कर रहे हो, डांट रहे हो, मार रहे हो, बिहेवियर स्ट्रेंथन हो रहा है भाई. इससे बेटर है चुप हो जाओ. Stop giving much of instruction. Instead of giving the instruction, show him the card without giving any expression. Fade yourself away if possible. यही मैं अभी तक में जितने क्वेश्चंस मुझे आते हैं, मैं तो यही सॉल्यूशंस देती हूँ जो मैं आज 15-20 साल से अपने अडल्ट्स पे और बच्चों पे कर रही हूँ. वर्क थ्रू एस्केप बिहेवियर्स. इफ द फंक्शन ऑफ द बिहेवियर इज एस्केप, आपको फॉलो थ्रू करना ही है. बच्चों के कर सकते हो, अडल्ट पे तो क्या आप फोर्स करोगे. पुट अटेंशन गेटिंग बिहेवियर्स ऑन एक्सटेंशन. द चाइल्ड ऑफन गिव्स सिग्नल बिहेवियर बिफोर द बिहेवियर अकर्स. वही तो एंटीसीडेंट्स होते हैं. Look for those. Place the child in a calming environment. Stay at a distance from the child. Teach calming strategies. What are the calming strategies? अगर verbal है या समझता है तो hold your hands, count, take deep breath, count 1, 2, or otherwise if he doesn't understand, कोई calming music दे देना. If he doesn't like to put on the headphone, ऐसी music या कुछ और चला देना. वो आपको ढूंढना पड़ेगा तरह तरह से. डाइवर्ट द चाइल्ड टू एन ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी दैट मे बी रीइंफोर्सिंग. ठीक है. प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव्स ऑलवेज. हमेशा उसकी चॉइस की चीज सामने नहीं दीजिए, हमेशा एक ऑल्टरनेटिव या एक चॉइस दीजिए. वांट दिस और दिस. द चाइल्ड इज गोइंग फॉर दिस, give him this. Even if the child is liking kurkure, if you are putting in front of him kurkure and popcorn, child likes kurkure, you know that. But if the child is going for the popcorn, give him the popcorn, because now he understands by choosing that popcorn, I am putting hands to the popcorn, तो मैं वो मिल रहा है. Whatever I am choosing, I am getting. कई बार आपने एक ढक्कन रख लो, एक मीनिंगलेस ऑब्जेक्ट रखो एंड कुरकुरे रखा है. You know the child will go for kurkure, but somehow अगर बच्चे ने वो कैप पे या ढक्कन पे हाथ रख दिया है जो मीनिंगलेस है, give him that. You have selected that ढक्कन. Modify activities, that is paper tearing in a basket to prepare collage. पेपर फाड़ रहा है तो पेपर को tear करके collage. Alternate activity देना होगा which is should be age appropriate and reinforcement वाली हो.
मीनिंगलेस बोरिंग एक्टिविटीज से कुछ होता नहीं। स्पिटिंग ओनली इन द वॉश बेसिन, प्रोवाइड लोशंस। अभी स्पिट कर रहा है बच्चा तो आप उसको, अगर वो सेंसरी इशू है तो आप कुछ उसको लोशंस दे सकते हैं, कुछ सोपी चीज दे सकते हैं जिससे वो लादर मिले या वो टच मिले जिसको वो नीड कर चाह रहा है। स्टेइंग अलोन हमें सिखाना ही पड़ेगा। पुट योर वन शेड्यूल, एक आपका फ्लैश कार्ड इन योर शेड्यूल, स्टेइंग अलोन, दिस इज योर लीजर टाइम, यू कैन प्ले बाय योरसेल्फ ओनली। कहां तक आप पीछे 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 लगे रहोगे? अवॉइड निगेशन, थ्रेट्स, ब्राइब्स एंड रेप्रीमेंड्स। ऐसे भी नहीं कहना है कि आप अच्छे से करोगे तो मैं आपको आज चिप्स दिलाऊंगा, आप अच्छे से करोगे तो चॉकलेट, ऐसे भी नहीं बोलना है। इंस्टेड गिव पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस एंड बी वेरी स्पेसिफिक on your instruction and work out the deals. If you have promised him कि आपने बोला है कि हम लोग पहले, ऐसे तो नहीं कहोगे कि आप अच्छे से काम करो and I'll give you chocolate, but अगर आपने बोला है कि we'll go to the market and Vatsal will behave, try to give the instruction in person's name, है ना? If Vatsal will behave properly, है ना, and we'll come back to the home and mama will give chips to Vatsal. तो वो आपने बोला है, वो आपको करना है। वो घर आ गया है ठीक से और आप चिप्स नहीं दिए हो तो बहुत बड़ी महाभारत होने वाली है। यूज कैलेंडर्स, क्लॉक्स एंड स्टिकर्स, मॉक ड्रिल्स एंड प्रिटेंड प्ले। कैलेंडर्स और वॉच तो देखना नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप स्टिकर्स के थ्रू, बिंदी के थ्रू कर सकते हैं। तो दीज आर द कैलेंडर्स वी यूज। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। putting on green color for the Saturdays and Sundays and for each and every day आप उसको करा सकते हो। ये हम लोग क्लास में कराते थे बच्चों को कि टुडे इज वेडनेसडे एंड टुडे इज वन, फर्स्ट डे वन एंड नेक्स्ट डे उसको क्रॉस कराया, टुडे इज टू, वन इज गॉन, क्रॉस कराया एंड टू पे टिक किया, अनदर डे टुडे इज थ्री एंड टुडे इज फ्राइडे, थ्री पे टिक कराया। इस तरह से कैलेंडर फॉलोइंग कराते थे हम लोग। उसी कैलेंडर के डेट्स पे आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं, डाल सकते हैं, आपकी सोशल स्टोरी लिख सकते हैं या कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इस वक्त बहुत बिहेवियर्स आते हैं। सो ऑन 23 देयर वाज अ चाइल्ड हु शोइंग बिहेवियर ऑन बर्थडेज। उनको क्राउड नहीं पसंद था, सो वी यूज्ड टू राइट अ सोशल स्टोरी फॉर दैट चाइल्ड। तो ऑन 23 योर बर्थडे विल कम और ऐसे ऐसे होगा, बच्चे आएंगे और पार्टी होगा, ऐसे करके डेली एक मंथ बिफोर से उसको रोज दिखाते थे। और 23 बर्थडे हम लोग केक कट करेंगे ऐसे करके। यूजिंग द विजुअल क्यूज वर्क वेरी मच फॉर दीज किड्स। ठीक है, 9-5 पे हम लोग पार्क जाएंगे। 9, ये बड़ी वाली निडल 5-1 पे आ जाएगी ना, तो 9-5 हो जाएगा, तब हम लोग विल गो टू पार्क। ठीक, लाइक दिस। Some of the strategies and principles for behavior modification for shaping, prompting, chaining. Shaping कहते हैं desired जो target behavior है उसको आप prompt करते हुए through hand और जैसे भी prompt करते हुए shape up कर रहे हो और reinforce किस वाले target को reinforce कर रहे हो उसको कहते हैं shaping, और उसको नहीं कर रहे हो उसको कहते हैं शेपिंग। हम बता देते हैं अभी आपको। और प्रॉम्प्टिंग, यू नो, आप असिस्ट करते हो पूरा तरह से हैंड ऑन हैंड असिस्ट करते हो या पूरा फुल प्रॉम्प्ट देते हो या जेस्चरल प्रॉम्प्ट, इसको प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। चेनिंग ऑल्सो ब्रेकिंग द टारगेट, जो टारगेट बिहेवियर है उसके स्टेप्स को ब्रेक करना इन सिंपल स्टेप्स। शेपिंग हम आपको, ये सिटिंग से पहले हम एक और शेपिंग बता दे रहे हैं आपको। जैसे सपोज करिए कि आप छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं छोटा सा। तो इफ you're teaching a child, 1.5-year child to clap, she's not putting her hands like this, you're prompting him to bring her hand ऐसे 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 ऐसे, आप सिखा रहे हो उसको। तो फर्स्ट डे आपने ऐसे करा, ऐसे करवाया, प्रॉम्प्ट किया to bring her hands close, you prompted her and you reinforced. Then again you prompted her this much and reinforced, and prompted her this much, reinforced, बाकी का इसने ऐसे कर दिया, पर आपने इसको भी reinforce करा, इसको भी reinforce। After some time you fade that reinforcement of putting her hands closer. She mastered that target, उसको आ गया है, and आपने reinforcement यहाँ तक लाने का you have stopped. Now you are reinforcing, bigger reinforcement आप दे रहे हो इसके लिए आप दे रहे हो, और इसके लिए आपने वो reinforcement stop कर दिया है।
So doing these differential reinforcement to the target behavior is known as shaping. कौन से वाले उसके रिस्पॉन्स को आप reinforce कर रहे हो और कौन से वाले को fade कर रहे हो. Suppose you are teaching him what's your name? Vatsal. आप prompt करो and he is saying Vatsal is my child's name, that's why I'm यही example ले रहा. तो आप वो बोल रहा है very nice, very good. What's your name? Vatsal. Very nice. 1 month तक आपने ऐसे किया, reinforce किया. अब आ रहा है वेरी गुड. आपने थोड़े दिन व को भी reinforce किया, व को भी reinforce किया, एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे आपने बोला व्हाट्स योर नेम? वत्सल. वेरी गुड. त को भी reinforce किया आपने, और धीरे 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 करके इधर वाले को आपने बार बार reinforce नहीं किया, और वत्सल कहने पे बहुत बड़ा सा reinforcement दिया. इसको कहते हैं शेपिंग. किसी को शेपिंग में कोई वो हो तो आप और एग्जाम्पल देके पूछ सकते हो कि कैसे हम शेप अप करेंगे, बट दिस इज एक्चुअली शेपिंग. किस वाले टारगेट को आप, जो आपके टारगेट बिहेवियर है उस तक पहुंचने के लिए जो रीइंफोर्समेंट दे रहे हो वो किस में देना है और किस में फेज करना है, इज नोन एज शेपिंग. Okay. So the shaping and prompting involves differential reinforcement of successive approximations to a target behavior. So for example, एक और लेते हैं, increasing the sitting time of a child during work. So you identify the highest reinforcement, the highest motivation for that reinforcement हो, जिसका plan approximations कि किस पे आपको लोअर वैल्यू reinforcement देना है और किस पे आपको हायर वैल्यू देना है और किस पे नहीं देना. आपने अप्रोक्सीमेशन प्लान कर लिया. अब बच्चे का करंट लेवल 6 for 4 or 5 minutes एंड आपका टारगेट है कि उसको 10 minutes तक का बैठाना सिखाना है. तो वी डेलिबरेटली डू दैट, राइट. सी, first week we give highest reinforcement for 5 to 6 minutes and give low value reinforcement in between. So for 6 minutes, for 5 minutes you used to sit. उसका 4 minutes, 5 minutes था. 4-5 minutes तक हम low value reinforcement, which can be music or any puzzle or any toy, आप दे सकते हो जिसका उतना highest value नहीं है. For that highest value will sit for 5th, 6th minute. You give that highest reinforcement for 5th, 6th minute and you will prompt him to go. Now your work is finished. Second week, third week, fourth week, fifth week, आप ऐसी एक एक मिनट करके बढ़ाते गए and give the low value in between, highest reinforcer at the end minute. Give the low value 8th minute पे highest, give the low value 9th minute पे highest value. इस तरह से 10 minutes आप अचीव करते हो. ये वीक है, आपको मंथ भी लग सकता है. So like this is known as shaping. Prompting is a temporary assistance, to get a desired response. For example, mother molding hand over the child's hand to teach holding a spoon and then guiding the child's hand to move the spoon. ये भी आपको पता है कि child should feel कि he is doing. आपको हाथ ऐसे लगाना है कि वो खुद से कर रहा हो, उसको लगे. ऐसे prompt करना है. The types of prompts: physical, verbal, gestural. Gradually removal of the prompt so that the child can perform the task or give the response independently, and if fading is not done, if fading is not done, the child may become prompt dependent. That is again a very big problem. Always fade the most intrusive prompt first. If the child has becoming verbally prompt dependent, it's very difficult. First of all, आपने verbal instructions उसको visual पे लाओ. Then it will be very easy for you to fade the visual prompts. For the flashcards, that's why I'm saying use flashcards, use schedules. Don't give any instruction. Flat face का expression दीजिए, right? Chaining involves breaking the target behavior in a sequential series of smaller and simpler behaviors. अगर आपको सिखाना है कोलगेट का या टूथपेस्ट का ढक्कन खोल के ब्रश में पेस्ट लगाना, ये आपका टारगेट बिहेवियर है, तो आप उसको सीक्वेंस में लिखेंगे. राइट डाउन द स्टेप्स. प्रेसिंग द पेस्ट टू अप्लाई द पेस्ट ऑन द ब्रश. Closing the cap, putting the paste in the
holder. These are the 3 steps. So you will work through the by the last step आप पहले सिखाओगे. The last step was pressing the paste and applying the paste on the brush. That was the last step. You will teach that first, and you will reinforce that behavior, and rest of the actions you will do. After he will achieve applying the paste to the brush, you will reinforce opening the cap and pressing. Opening the cap. You will reinforce. You will stop reinforcing the applying the paste. You will reinforce now opening the cap. When he's mastered for opening the cap, you will stop reinforcing opening the cap, and then the first step was taking the paste from the holder. You will reinforce that step. Prompt him to do that, reinforce, and stop giving reinforcement for other last 2 steps. That way we go backward direction में training चलता है. So there's one more example, washing after toilet. If these are the steps, filling water in a mug. आजकल तो what we generally do, hand shower आ रहा है, तो सारे हमारे adults, सारे बच्चे hand shower यूज कर रहे हैं. ये बहुत पहले का लिखा हुआ. Filling water in a mug, pouring water and cleaning self. These are the steps for washing after toilet. We will go backward. Cleaning self पहले सिखाएंगे, pouring water बाद में. अच्छा, backward क्यों चलते? So that they somehow they get a sense of achievement, that they learn very quickly, and they are being reinforced. This is the kind of feeling they get when you immediately reinforce, and it's a sense of achievement. I did it myself. If you start teaching him the very first step, filling water, then pouring, then cleaning, and then you will reinforce, so it will not make any sense. So cleaning self आप सिखाओगे with prompt, reinforce, with prompt, reinforce. After that, pouring water सिखाओगे and reinforce. Pouring water, reinforce. Cleaning self, you will stop giving the reinforcement, and after that, filling water. That way we go backward. It helps very much in the ADLs. जब आप कपड़े पहनना सिखा रहे हो, ट्राउजर पहनना, पैंट पहनना सिखा रहे हो, टी-शर्ट पहनना प्रॉपर सिखा रहे हो, सोप लगाना सिखा रहे हैं, जितने भी ADL एक्टिविटीज हैं उसमें ये ट्रेनिंग, बैकवर्ड ट्रेनिंग बहुत वो करता है, फायदा होता है इससे. तो दीज आर ऑल द स्टेप्स. हो गया हमारा. अभी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे. ये तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल करना भी तो होता है. एनी क्वेश्चंस? और अदरवाइज कल सोशल स्टोरीज पे लेक्चर है. हाउ डिड यू लाइक द सेक्शन? सब लोग कुछ कैमरा ऑन कर लो. मेरा कहना यह है कि कल जो है, किसी को अपनी कोई ऐसी टफ सिचुएशन है जो डिस्कस करना हो, तो वो सिचुएशन को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि सिचुएशन के आधार पर सोशल स्टडीज लिखी जा सकती है. अच्छा, इज इट ओपन टू ऑल? ये प्रभा जी पूछ रहे हैं. ओपन टू ऑल मींस व्हाट? टुमारो सेशन. हाँ, it is open to all those who have filled the form. If you have not filled the form, fill the form. Right? Ma'am, thank you very much for the detailed descriptions, ma'am. Thank you very much. Really, thank you. Jyoti ji, I think she has some questions. She has raised her hand. Jyoti ji, want to ask any question? जी मैम, आपने जैसे बताया थोड़ी देर पहले कि जो हम उसको पनिशमेंट की तरह नहीं तो उससे ही साफ करवाते हैं, कुछ गलत किया तो फिर उससे ही करवाते हैं, तो वो जैसे रीइंफोर्समेंट बनता जा रहा है, तो हमारे केस में वैसे ही हो रहा है. देखिए, और ये आपने बहुत मुझे एग्जाम्पल में है, आप ही लोगों में से एग्जाम्पल निकल आ रहा है, वही है ना? जी, हम लोग कंफ्यूज रहे बहुत दिनों से, मतलब 1-1.5 साल से भी कंफ्यूज रहे कि इसको कैसे समझाएं. अगर हम कुछ उससे करवाते हैं, गलती किया तो अगर इग्नोर करते हैं तो भी बढ़ रहा है कोई भी बिहेवियर. अगर उसको वर्बली बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो और भी कर रहे हैं, तो हमें करना क्या है फिर ऐसे में? सपोज उसको वो लिखने के लिए कुछ दिए तो वो बहुत प्रेशर लेके वो लिखता है, तो फिर पेन टूट जाता है. तो हम उसको बोलते हैं कि धीरे धीरे से लिखना है, ज्यादा प्रेशर नहीं, तो ज्यादा करता है. हाँ, अगर वो नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले तो भी वैसे ही करता है.
अच्छा, नहीं बोले तो भी हाँ। कर रहा है, बोल रहा है तो भी वो कर ही रहा है। तो भी कर रहा है। तो हमको बहुत कंफ्यूजन होता है कि उसको पनिशमेंट दे के नहीं तो कुछ और करके क्या करके उसको सिखाएं कि ये चेंज करना है। तो देखिए लिखने हमको वाला तो बहुत क्या है, चीज़ से पूरे दिन में हाँ लिखने वाला तो क्या है, मे बी कि ही इज नॉट डूइंग, अभी वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो हो सकता है उसको उतना प्रेशर आ जा रहा हो। आप पेन चेंज करके देखिए। नहीं, जैसे बहुत पॉइंट जाड़े वाले पेन भी देते हैं ताकि जल्दी जल्दी टूट ना जाए। उसको मालूम है कि ये टूट जाएगा ऐसे लिखने से। वो बोलता भी है कि मैं ऐसे जोर से लिख रहा हूँ, फिर ये टूट जाता है, फिर भी वो वैसे। तो अच्छा, उसको मालूम है। हाँ तो मालूम है कि हम ऐसे कर रहे हैं और ऐसे हो जा हाँ रहा है, हाँ, तो हो उसको सकता है मालूम वो भी है। जानबूझ के कर रहा है, फिर इसका हाँ मतलब। हाँ, हो सकता है कि मैम ही इंटेंशनली डूइंग एवरीथिंग। सुबह से लेके शाम तक उसका वो नेचर जैसा बनता जा रहा है और वो हमको परेशान भी कर रहा है अच्छा, कि अब हम लोग कैसे। अगर एकदम कॉपी पे लिखना बंद करा दें, फिर उसको वो एक है बोल्ड पे लिखने को बोले थोड़े दिन, तो वह वो भी करे मैम। तो के मार्कर लेके व्हाइट बोर्ड लेके उससे तो वो मार्कर भी ऐसे पूरा फ्लावर जैसा बन जाता है, इतना ऐसे जोर से लिखता है। उसका ब्रश भी खराब हो जाता है, पेन भी है तो वो और टूट जितनी बार जाता है। आप मना करेंगी वो और होएगा। हाँ, और उसको ये मालूम हो गया कि इतना मैंने ऑप्शन करके देखे, फिर हर बात उसको वो उसमें उसका गलत बिहेवियर तो आता ही है। तो कभी कभार तो हम उसको नोटिस भी दे देते हैं, मतलब इग्नोर नहीं कर पाते। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा वो पूरा इंक नीचे गिर गया, कपड़े खराब हो गए, ये हो गया। तो कभी कभार तो रिएक्शन ज्यादा हो जाता, फिर उसको और मजा भी आने लगा। कभी कभार उसको पक्का मालूम है कि ये नहीं करना है। चलिए आप लोग में से कोई आंसर दे इसका, भाई क्या करना चाहिए? किसी के पास कुछ है? कैसे सिखाएं? ऐसे अगर वो सिचुएशन टाइपिंग मेरे का कुछ दिन भर बोले आते उसको कि रहते हैं। टाइप करे ना लिखे, कुछ दिन के लिए लिखने वाला चीज हटा ही दे। नहीं, वो भी करे वो कीबोर्ड दिए उसको, हाँ, वो कीबोर्ड इतना जोर से प्रेस करता है। हाँ, अभी इतना तो जोर अब से। सब कुछ फिर वो अटेंशन के लिए करने लग गया है, चक्कर ये हाँ, हो। वो तो अटेंशन सीखेंगे लेकिन बिहेवियर इतने सारे हो गए। अटेंशन सीखेंगे। अब अब सुबह यहाँ ब्रश तो करने सोशल जाता है स्टोरी तो नहीं ब्रश वर्क भी करेगा, यहाँ तो कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट चीजें ही ट्राई कर सकते हैं कि अभी हम ये नहीं कर सकते। और अभी उसने ये सीख लिया है कि हम ऐसे करेंगे तो ये लोग हमें बोलेंगे ही। उसको मालूम ही है। अब जो 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 चीजें उसको गलत तरीके से, जो सही तरीका है उसको वो भी मालूम है, और गलत करके भी वो अटेंशन और खींच रहा कितना है बड़ा हमारा। है वो? वो 24 है। हाँ, तो फिर उसको अब वो लिखने विखने से वो हो रहा है, आप लिखने का काम ही क्यों करा रहे हैं? नहीं, उसको भी थोड़ा एंगेज करने में वो भी एक कुछ और चीज में अभी थोड़े दिन, क्योंकि बहुत ज्यादा रिजिड हो गया है चीज, अगर कुछ दिन के लिए ये राइटिंग रोक के, कुछ दिन के लिए, हम ये नहीं कह रहे हमेशा लिखना रोकेंगे, पर कुछ दिन के लिए रोक के हम कोई और एक्टिविटी में लगा दें जिसमें वो ये चीज न दिखा पाए हमें। वो तो हम उसका स्टडी में ऑटिज्म है, एडीएचडी है, तो फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज देंगे। राइटिंग रोज भी नहीं देते, हफ्ते में 1, 2 या 3 बार, वो भी अभी तो 24 ईयर्स में हम फोर्सफुली भी कुछ नहीं कर सकते, हमें रोकना ही, नहीं मतलब कर हमें सकते नहीं ना। देना पड़ेगा, क्योंकि हम बोल भी नहीं सकते कि मत करो मत करो मत करो। वो उल्टा मुझे आके बोलता रहता है कि मैंने आज पेन खराब कर दिया, मैंने नहीं ऐसा नहीं, वो किया। रहना पेन, और फिर अभी अभी तो इसी एंटीसीडेंट पे काम करेंगे कि उसको पेन और कागज दिखना ही नहीं। अब बहुत मुश्किल है ये करना, लेकिन अभी क्या करें, तो वो स्टॉप करेंगे बिल्कुल, देंगे ही नहीं। और हम कोई और एक्टिविटी में, ज्वेलरी उलरी बना सकते हैं क्या? ज्वेलरी बहुत अच्छी अच्छी बनती हैं, या कोई और फोल्डर्स बनाना, जिस तरह के वोकेशनल वाले काम जिसमें उसको मजा भी आए। एक्चुअली शायद लिखने में मजा भी नहीं आ रहा है। आउटडोर मतलब एक्टिविटी नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत जब से छोटा है तब से वो लिख करते ही ही जा रहा रहे है, हैं। और उसको लिखने का कुछ हाँ, मिल तो रहा नहीं है ना, कुछ क्या कर रहा है, लिख रहा है, लेकिन एक हमको चीज क्या है मिल रहा है? मैडम। नहीं, एक चीज है मैडम, ये एक लिखने के इश्यू से नहीं है। सुबह से शाम तक वो अटेंशन सीकिंग का इतना उसको इसीलिए मैं कह रही हूँ कि है। कुछ कुछ और वर्क, एक तो सबसे पहली बात, वो क्या खाली लिखता तो नहीं होगा, सारे दिन की और भी एक्टिविटी, एटलीस्ट 4 आवर्स की पूरा दिन भर एक्टिविटीज आप प्लान कर लो।
हाँ, नहीं, उसका पूरा जो रूटीन रहता है, पूरे रूटीन में भी वो हर चीज वो गलत तरीके में कर रहा है। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है जो आपसे मैं और ये discuss जो करना है, चाहती ये जो गलत तरीके से कर रहा है, ये किसके साथ दिखा रहा है ज्यादा? हूँ। ये घर में सबके साथ वैसे ही कर रहा है। और अब पहले बाहर कहीं जाता होगा तो नहीं दिखाता है? कभी कभी कर लेता था वो, बाहर भी थेरेपिस्ट, बाहर भी अभी वो क्लास में घर पे जाता ही है या कहीं जा रहा है? है। जा रहे हैं, निकट में जा रहा है, हैदराबाद में 2-3 घंटे के लिए जा रहा है। 24 साल लेकिन के लड़के को ज्योति जी 2-3 घंटे से कुछ होना नहीं। जी, आपने मुझे पहले भी बताया कि ये इससे कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन 24 साल उसका के ये लड़के जो को सुबह से लेके बिहेवियर 6 बजे तक घसीट के रखना है बिल्कुल। जी जी, वो सही है। तो वहां पर भी शुरू हो रहा था 3-4 साल पहले, हमने उसको 10 to 6 रूटीन में रखा बाहर। तो बाहर भी वो वैसे ही उसका रिपोर्ट वैसे आता था कि हर हफ्ते में 2-3 बार उसका कुछ ना कुछ बिहेवियर तो रहता ही है मैम। कुछ अगर जितने भी बिहेवियर्स है उसको थोड़ा अगर इग्नोर कर सकते हैं तो बिल्कुल इग्नोर कर दें। अगर आपको पढ़वाना ही है कागज तो दे के इग्नोर कर दीजिए, पढ़ने दीजिए, बिल्कुल रिस्पॉन्स मत दो। और हम तो कहते हैं कागज और वो ना मिले, बाकी चीजों पे हो रहा है, होएगा होएगा बिहेवियर, मैं ये नहीं कह रही एकदम खत्म, पर आप इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर कर दें, बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दें उन चीजों पे जिन पे आप ना दे के काम चल सकता है। उस तरह से थोड़ा स्टॉप होगा, अटेंशन में कन्वर्ट हो रहा है। एक, हाँ, वो तो हमको भी मालूम हो गया पूरा, वो अटेंशन ही है दिन भर उसका। लेकिन वो आके बोलता है हर सिचुएशन में, उन्हें जो जो वो गलत तरीके के काम करता है तो आके हमको बार बार बोलता रहता है और फिर कि आप मैंने क्या करते ऐसा हैं? आप सुनो किया। मत, आप मत सुनो। ये भी उसको, वो बहुत बहुत स्मार्ट होते हैं ये बच्चे, उसे पता है कि हम ये सब करेंगे, नहीं, घर में आके हम हम इनको बोलेंगे और ये परेशान होएंगी। नहीं, हम अगर थोड़ा भी कोई ना कोई पॉजिटिव तरीके से उसको क्लोज करते हैं, इसलिए करते हैं कि आगे जाके वो अगर तो टोटली इग्नोर कर दिया, उसको अटेंशन नहीं दिया, कोई भी अटेंशन रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो एग्रेसिव हो जाता है। फिर वो जैसे आपने बताया कि ब्लैकमेल कर रहा है, तो देखो फिर इसका डरा मेथड धमका यही के है वो कि बाकी रिस्पॉन्स के नहीं रहा जो है। जो बिहेवियर बैड आ रहे हैं ना, जो भी आप दे रहे हैं वहां सेंटर पे या घर पे देंगे ही आप, उससे अगर बैड बिहेवियर आ रहे हैं तो उसको इग्नोर करके, लेकिन साथ में क्या कुछ अच्छी चीजें भी करवा रहे हैं जो वो सच में अच्छा कर पा रहे हैं तो उसको बहुत रीइंफोर्स करिए। जैसे घर में आए आप बोलो आपने ये बनाया वहां पे, मुझे पता लगा, बहुत इतना ज्यादा उस पर अटेंशन दीजिए उसके अच्छे वाले पे कि वो सब जैसे ही वो बोलना शुरू करे ब्ला ब्ला ब्ला, अरे आपने तो नाम लेके आपने वो इतना अच्छे से किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे टीचर्स ऐसे कर करके, उससे भी तेजी से फिर वो आपको एक तरफ बार देखेगा कि ये इनको क्या हो गया है। मेरा कहने का मतलब है जो अच्छे बिहेवियर उसने दिखाए हैं अगर कुछ, तो उस पर ज्यादा ध्यान दे के बोलिए, उसकी बैड वाले को सुनिए ही मत। बहुत अच्छे से उसने पकड़ लिया है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। पकड़ लिया है, पकड़ लिया, क्योंकि वो जो एग्रेसिव बिहेवियर हमको दिखाता था तो हम परेशान हो गए, बहुत चीजें तोड़ फोड़, मुझे मारना, नहीं तो अग्रेसिव हो जाना, चीजों को खराब करना, ये सब हम देख देख के उसको अवॉइड करने के लिए कुछ कुछ चीजों को हम इग्नोर करते हाँ, गए। और तो शाम के वक्त के लिए तो आप जो है, शाम के वक्त के लिए आप कोई टीचर या कुछ थोड़े महीने के लिए लगाओ आप, जिसमें कि आप नहीं, आपसे वो आके नहीं बोले, टीचर से वो बोलेगा वो सुनेगा ही नहीं उतना। हाँ, वो तो अटेंशन नहीं देते ना। हाँ, वो सारी प्रॉब्लम सेंटर ही में हम सब जाता है आज पेरेंट्स से, जब सुबह बड़े भी, हो जाते हैं ना बच्चे तो ये हम लोग को परेशान करना शुरू करते हैं। जो सुबह वो सेंटर के लिए जाने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसको तो आपको ये जो परेशान बिहेवियर करना से, है। हाँ, हाँ, उसको अच्छा लग रहा है। मैं कितना भी वो मना करता है, तैयार भी एक नहीं अगर करता नहीं है, जा रहा, वैसे तो वो जाना लेके जाते जरूरी हैं। है, और नहीं जा रहा है तो आप किसी थर्ड पार्टी अप्रोच, मतलब माँ, वही बात वहाँ पे सबसे दो मैं तीन कहती हूँ। घंटे रहता है। हाँ, 2-3 घंटे रहता है तो इतने बिहेवियर्स नहीं दिखाता है वहाँ पे, वो घर आते ही शुरू हो जाते हैं घर उसके। आके शुरू, वहां पे दिखा हाँ, नहीं पा रहा है तो वो वाला मैक्सिमम इतना टाइम क्योंकि करना है। अटेंशन नहीं मिलता उसको, 8-10 बच्चे रहते हैं, सबको टाइम टाइम दे के काम कराते रहते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं, इसकी बात भी नहीं सुनते।
वहां नहीं हो रहा होगा ना। एक कोई नहीं हो टीचर रहा। आप या कोई हेल्पर कुछ दिन के कुछ महीने के लिए चाहे लगाओ, और कुछ अच्छा हाँ, शेड्यूल बनवा लीजिए आप मुझसे कि हाँ ये करेगा। इंटरेस्ट के। हाँ, कुछ हाँ, शेड्यूल बनवाइए, जैसे साइकिलिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, जो भी उसका जो कर सकता हो। जैसे हाँ, मेरा बेटा साइकिल बहुत अच्छा चलाता है और जिम बहुत एंजॉय करता है। हाँ, हाँ, तो अब हम ही ले लेके जाएंगे तो वो तो वहां भी मेरा फिर अटेंशन, अगर ऐसा बिहेवियर है तो करेगा ही। तो किसी हाँ, और वही हो के रहा साथ, है हमारे। किसी और हाँ, के साथ। देखिए, सुबह का शेड्यूल आता है सेंटर का, वर्क प्लेस का, स्कूल का। शाम का शेड्यूल होता है घर वाला, जिसको आपको हटाना है। अच्छा, हाँ, इन बच्चों के साथ तो हटाना ही है, क्योंकि फिर वो कुछ और सोचेंगे। इसलिए इन बच्चों के साथ, और वो आपको नहीं लगना है कि आप ही पार्क लेके जा रहे हो, आप ही साइकिलिंग, आप ही तो फिर क्या बिहेवियर हटा। किसी एक हाँ, हाँ, टीचर या हेल्पर को सिर्फ 1-2 घंटे को लगा के उसका जो जो ये वाला पैटर्न बना है ना कि आपको डिस्टर्ब करना है, वो ब्रेक हो। कोई थर्ड पार्टी शेड्यूल से। अच्छा सा बनाओ शाम के टाइम का। तभी जी। वो आप तब जब अच्छे शेड्यूल, अच्छे रूटीन पे आप रीइंफोर्स करोगे और सुनोगे बात, तो वो बैड वाला कहना उसका रुकेगा। कोई दूसरा ऑप्शन देना पड़ेगा। एकदम से हम कह दें आप इग्नोर करो, और फिर क्या चीज इग्नोर ना करो, कुछ तो अटेंशन देना पड़ेगा ना कुछ चीजों पे। अल्टरनेटिव किसको भी हाँ, तो वो अच्छी वाली पहले इम्प्लीमेंट कर दें शेड्यूल के थ्रू, फिर हम इग्नोर करेंगे जब वो बोलेगा हमसे। जी। ठीक है, पहले पॉजिटिव। पहले पॉजिटिव रूटीन बनाइए शाम का अपने को फेड करते हुए, तभी तो हम उधर रीइंफोर्स करेंगे तो इधर स्टॉप करेंगे। जब हम कोई बिहेवियर स्टॉप करते हैं, कोई रीइंफोर्समेंट, तो हम ऑल्टरनेटिव को सोच के रखते हैं जिसको हमें रीइंफोर्स भी करना हो। खाली स्टॉप करा स्टॉप करा तो फिर क्या करेगा बच्चा। हाँ, कुछ तो अच्छा भी करना है और उसको हाईलाइट करना है। ठीक है। चलिए, और कल फिर हम लोग, कल का सेशन सोशल स्टोरीज का है। ठीक है, अभी और किसी को कुछ कहना है? हम्म, नहीं, वो उठा ही हुआ था। चलिए फिर एंड करते हैं। गुड नाइट एवरीवन।